Public history is about taking the past beyond classrooms and books. It asks a very simple but important question. How does history live in public life? The master students of DU have worked across a range of historical sites in Delhi, and they have thoroughly enjoyed working on this new experiment of learning history. They surveyed the sites, they looked at the primary sources, and then interacted with the common people to understand people's perception and how it has changed over the decades. Their aim is to explore how history exists not only in monuments and archives, but also in lived experiences of people and their memory. कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जो अर्जी लगाई उसमें कहा गया है कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए उन मूर्तियों की पूजा मुगलों ने अपना इमारत लगा हुआ टावर, इसका नाम रख दिया कुतुब मीनार। ये एक मोहम्मदनी नाम है। Most popular place and the first victory of Muslims and the first mosque of northern India. इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर ये साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल। ये जमीन तो हिंदुस्तान की है And it's a World Heritage Monument. किसी का छीनने से कोई चीज उसकी होनी जाती है, होती उसी की जिसकी पैदा की जाती है। इससे पहले कि हम इसे कोई नाम दें या हम इसे अपना बनाने का दावा करें, क्या हम सच में उस चीज का सामना कर सकते हैं जो हमारे सामने खड़ी है? राइजिंग अगेंस्ट द स्काई, अनयील्डिंग, अनब्लिंकिंग, ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग अस बैक, व्हाट इज दिस मॉन्यूमेंट? इज इट अ वुंड इन स्टोन, echoing loss and rupture, or is it a triumph of human imagination where new forms rose from older worlds, shaping something entirely different? Why does one tower hold so many truths, layered, contested, inherited, and endlessly retold across generations? कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में स्थित एक ऐसा स्मारक जो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास, यादों और व्याख्यानों का संगम है। हर साल देश और विदेशों से हजारों लोग यहाँ आते हैं इसके भव्य निर्माण, अद्भुत इंजीनियरिंग और मनमोहक दृश्यों का अनुभव करने। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सुंदर मीनार है? अपने निर्माण के समय यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित सल्तनत शक्ति का प्रतीक थी और उस दौरान में यह पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची संरचना थी, एक ऐसी उपस्थिति जो दूर से ही शक्ति और प्रभाव का एहसास कराती थी। आज अर्बन डेवलपमेंट के बीच शायद ये दृश्य बदल गया हो, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ अब भी उतना ही मजबूत है। I think the city like Delhi lives in smaller streets and older monuments. So the newer Delhi it appears to be very beautiful, but the real beauty lies in the old monuments that we have. ऐतिहासिक रूप से यह स्पष्ट है कि इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के दौरान ही हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ इस स्थान की व्याख्या बदलती गई है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक मेल मिलाप का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ के लिए यह विजय और प्रभुत्व की कहानी है। Most popular place and the first victory of Muslims. यहीं स्थित कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क और अन्य संरचनाएं जिनमें प्राचीन मंदिरों के अवशेषों का प्रयोग पर भी चर्चा होती रही है, इन सब ने मिलकर इस स्थान को एक स्मारक नहीं बल्कि एक मजबूत डिबेटेड स्पेस बना दिया है। समय के साथ लोगों की दृष्टि में कुतुब कॉम्प्लेक्स का क्या और कैसा अर्थ रहा है, लोग इसे कैसे जानते हैं, उनकी जानकारी का स्रोत क्या है और सबसे महत्वपूर्ण वो इस स्थान को किस नजरिए से देखते हैं। Many tourists, especially those visiting for the first time, were amazed by the size and beauty of the Qutub Minar. For them, it was mainly a symbol of India's rich history and architectural brilliance. Various people expressed their views which they held about the Qutub Minar, while other visitors were more curious about the particular details, like the carvings on the pillars of the Quwwatul Islam Mosque and Mystery of the Iron Pillar. When we spoke to the local people in Mehrauli, the views were more personal. For them, the Qutub complex is not just a monument, but a part of their daily life and identity. Some locals mentioned that they have grown up seeing it, and some even said that they used to climb the minaret and play cricket. They feel very proud of its global importance. Minar is looking good. I think that socially also very different at that time. We know about this place, but we don't know what the background significance is. and historical background. Yeah, these pillars are really attractive. That architect and works and all is really attractive. मतलब इतने बड़े पत्थर यहाँ पर जो स्लैब है, स्लैब जानते हो जो ऊपर लगाए थे स्लैब, तो इन्होंने मतलब पत्थरों की बनाई है वो
डिस्टेंस आप देखो लगभग 1 मीटर 2 मीटर, तो इतने 2 मीटर ऊपर मतलब इतनी हाइट पर इसको पूरा बंद कराएं, तो ये इमेजिनेशन के लिए बहुत कुछ है। जिस कुरान वर्सेस है जो कुरान है ना, इसकी वर्सेस 1100, right? So you can see the original structure, even the fine architecture or fine design of the column, if you can. That actually is the word, it's mentioned in our Quran, So the evergreen design, I would say. I mean, if you design something like this, it will stay for generations. And just imagine Delhi is full of earthquakes. Yes. And it's still, I don't know what material they used, but still it's leaning a little bit and not falling. So there were beautiful temples here, and look at the work in the temples also, Hindu and Jain here. Even see the work on the Quranic inscriptions. This style is called Kufi writing. Iron pillar, which is 1,600 years old. So high, it is 238 feet. And how would they take the stones up, and then the workmanship outside? The Qutub Minars debated, seen either as a victory tower or a symbol of Islamic authority, reflecting both political remainings and architectural brilliance. When we enter Qutub complex, most people immediately pictures the Qutub Minar and Quwwat al-Islam Mosque. But this site has a far more layered historical landscape. Take the tomb of Shamsuddin Iltutmish, present in the northwest of the Minar, built in 1235. Its intricate carving and lost tomb reflect early Indo-Islamic experimentation in India. The Alai Darwaza, which is the southern gateway of the Minar, was added by Alauddin Khilji. It showcases refined arches and geometric precision in the architectural style, while the unfinished Alai Minar reveals an interrupted imperial ambition. Khilji spent most of his time in invading various territories. He used to go to South India also sometimes and bring tributes from those areas. But he is also credited to have constructed the famous Alai Darwaza, which is part of the Qutub complex. And that Alai Darwaza is actually very famous for the arches, what we call as the Indo-Islamic. Now, it is only after this construction of a arc form that the domes and the big domes and the double domes later came into practice. So one of the first thing that Alauddin Khilji had achieved through his artisans was the creation of this art. The later additional structures, for example, Imam Zameen Tomb and Madrasa, further complicate the story behind this complex. Today, many of these structures survived only in fragments. Their hewn forms, engraved designs and patterns reminds us that this site is not static, but historically contingent. Each layer of structures and monuments inside the complex reveals continuous interventions by different rulers and even colonial restorers. And that's what makes this site powerful for public history, as it invites us to look at the monuments beyond as iconic, instead as an evolving, contested historical process that is shaped over centuries. We commonly came across two shades of visitors, some who were awed by the intricate Arabic and Persian carvings all over the structures in the complex, and others who were looming largely around the Iron Pillar and the Hindu and Jain temples that were destroyed by the Sultan. They emphasized a need for restoration and a right to worship. The fact that the mosque was constructed using the remains of 27 Jain and Hindu temples is not mere speculation. It is clearly mentioned in the Persian inscription on the eastern gateway of the Quwwat ul-Islam Mosque. But can the narrative be as simple as undoing historical wrongs? Scholars like Finbar Barry Flood would disagree. In medieval times, reusing material of cultural significance was more common than we'd like to think. Even economically viable for a sultan like Qutbuddin Aibak, who was trying to find his footing in Delhi. Look at the Gupta-era iron pillar standing in the mosque courtyard. It is often posed as a Hindu contrast to the Islamic minaret. But medieval Indians, Hindus and Muslims alike, use the words stamp or minar interchangeably for these structures. These narratives not only complicate the picture, but they put up important questions like, has this minar or has this monument ever really belonged to the Hindus or the Muslims alone?
Standing in the Qutub Archaeological Complex, we often focus on the towering Qutub Minar as the symbol of Delhi Sultanate. But if we focus on the pillars and stones around us, another story appears, the one written in Sanskrit. On the left-hand marble abutment on the 4th floor, an inscription has been found in Sanskrit Nagari script. Several pillars and stones have been found in the Quwwatul Islam Mosque carrying Sanskrit inscriptions in Nagari script, dating 10th to the 12th centuries. Now, these inscriptions include temple dedications, names of donors, and invocations to deities such as Shiva and Vishnu. What does this tell us? It reminds us that Qutub is not just a monument in a single moment. It is a layered historical site where remains of earlier temples have been incorporated into the later Sultanate architecture. In public history, this matters because it demonstrates that monuments are not frozen in time. They are built, they are rebuilt and reinterpreted. At Qutub, stone becomes an archive preserving voices in multiple languages: Sanskrit, Arabic and Persian. These are our, heritage, yeah. So why don't we emphasize on the heritage rather than making it more communal and political and whatever, What they have to do right now in today's world, they don't have to, what people have built it for India, they built it for India and we are making money through it, right? Yes. We are making money through it, our name is being there in this world because of Taj Mahal and monuments like this, where you will see all this architecture. And yet, step just beyond the noise of the debates, the narrative begins to shift. Just beyond the frame of these arguments, where the monument is not just observed but encountered, history is not argued, it is lived. For those who wake up in its shadow, who pass in its rhythm of daily life, the Minar is neither a distant symbol of conquest nor a contested symbol of glory. It is just familiar, ordinary, and perhaps in that ordinariness is that something extraordinary. Because here, memory does not fracture as sharply, it settles, it adapts and it coexists. The same landscape that holds the Quwwatul Islam Mosque also breathes alongside the Yogmaya temple, not as opposite locked in tension, but as presence woven into a shared space. Perhaps the Qutub complex offers something more that we often overlook, not just a singular truth to defend, but a possibility to inhabit. A reminder that history, when lived rather than fought over, can become a bridge instead of a boundary. तो ये जो कुल्लू विद्रोह है ये बहुत खारिज थे गाड़ी चला जाता है कि ये कोई पिछड़ा या चिरा है ये हाल है और जब यहाँ पर शाह बुद्धू हो हिंदुस्तान में आए थे लोग लिटरली कदीर आने है एक पूरी हिस्ट्री वो जो आके तो रिजिस्ट्रान जो पता कर दिया तो ये तो उस तरह का बिल्कुल का यहाँ का ये जो जमाली कमाली है या कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जाने के लिए हम कभी भी मेन रोड का इस्तेमाल नहीं करते थे। जो भूल भुलैया का चौक है वहाँ से चर्च के पास से निकलकर और दीवार को पाद के हम नीचे तो उस जगह मतलब जो दूसरी वहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में आपने कुछ सुना? स्ट्रक्चर्स मोरलेस सेम है, उसमें देयर इज नो चेंज। जो लाट है बीच में अशोक लाट जो है वो ओपन थी, वी कुड गो अप टू दैट प्लेस और वो उसको हम उसमें मतलब उसका सिग्निफिकेंस कुछ है वो क्यों? वो हिंदू मुस्लिम को थोड़ा जोड़ने के लिए था। वो आई बिलीव मुगल काल से शुरू हुआ था या आफ्टर मुगल काल, आई डोंट नो, और वो बंद हो गया था। देन जवाहरलाल नेहरू ने शायद दोबारा शुरू किया था। तो उसमें ये है कि बख्तियार काकी की मज़ार है यहाँ पर, वहाँ पर हिंदू लोग जाके चादर चढ़ाते हैं और मुस्लिम जो हैं वो योगमाया जी मंदिर है, वहाँ पर जाके फूलों के पंखे चढ़ाता। यहाँ दरगाह है, गुरुद्वारा है, योगमाया मंदिर, दूर दूर से लोग आ गए, लेकिन हम नहीं जा पाते लोग, ना बच्चों को ले जाते, जबकि ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैंने खुद देखा कि जो स्तंभ जो बने हुए थे वहाँ, तो अब तो खंडर है, तो उसमें क्या कि मूर्तियों के मुँह तो उनके मतलब वो खंडित किए थे। वैसे जैनियों का मंदिर था इसके। बहादुर जात जफर जो थे, उनकी जो रानी थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी यहाँ पे योगमाया मंदिर के अंदर
और दरगाह कि अगर हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा, छूट जाएंगे, तो मैं यहाँ दरगाह में चादर चढ़ाऊंगी और वहाँ पे योग माय मंदिर में पक्का। अभी आपने जो इंटरव्यू देखे उनसे ये साफ होता है कि कुतुब मीनार एक सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि महरौली के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक हिस्सा है। यहाँ के लोकल लोगों के लिए यह जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि उनकी पहचान उनकी यादों और उनके अनुभव से जुड़ी हुई है। हमने कुतुब मीनार के आसपास रहने वाले लोगों से बातचीत की, जिनसे हमें कई दिलचस्प लोक कहानियां और परंपराएं पता चली। सबसे पहले उन्होंने फूलों की सैर नाम एक त्योहार के बारे में बताया, जिससे यहाँ के लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और आज भी यह त्योहार हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा समान रूप से मनाया जाता है, जो इस क्षेत्र की साझा संस्कृति और एकता को दर्शाता है। दूसरी कहानी बहादुर शाह जफर द्वितीय की बेगम से जुड़ी है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वह महरौली के पास एक झरने में स्नान करने के बाद कुतुब मीनार पर चढ़कर सबसे पहले यमुना के दर्शन करती थी और उसके बाद ही भोजन और अन्य कार्य करती थी। यह कहानी इतिहास और आस्था के मेल को दर्शाती है। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस पर तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इन लोक कथाओं से एक बात तो सिद्ध होती है कि कुतुब क्षेत्र एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि जीवित सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी है। और यही पब्लिक हिस्ट्री हमें सिखाती है कि किसी भी स्मारक को समझने के लिए वहाँ के लोगों की आवाज को सुनना उतना ही जरूरी है जितना कि उसके इतिहास को पढ़ना। We had many questions when we came here and we stood before the Minar. While it seemed unconcerned, unchanged for centuries, it watched as empires were raised and shattered, as arguments rose and fell. We asked what it meant, a symbol of conquest or of creation, a wound or a wonder. It gave us many verses instead. The scholars read inscriptions like arguments carved in stone, while travelers stood speechless in its shadow. For devotees, it feels something sacred is still breathing in these walls, and the locals pass it every morning without a second glance, because for them, it is simply home. Every one of them is right and none of them completely. This complex is engulfed in layers, offering a mirror for the present, not a verdict on the past. A reminder that history is not a finished project. It lives, breathes and argues with itself, especially in a world that is always rushing to claim, to rename and to own. Perhaps we need to pause and stand beneath something older than our certainties and reflect. History does not belong to one story, one community or one claim. It belongs to time itself. This complex offers us better questions, and in a country still learning to hold many truths at once, that may be exactly what we need. These stones have been passed down through the generations and offer different versions to share. However, the real question is, then are we willing to hold them together? क्योंकि इतिहास वो नहीं जो सिर्फ किताबों में लिखा है, इतिहास वो है जो हम जीते हैं।